Hello everyone, welcome to Apti Plus Editorial Analysis. So today video session will be dedicated to the editorial analysis from the Hindu as well as from the Indian Express. So we'll figure out the important aspect of the editorial और समझने की कोशिश करेंगे कि editorial को आप prelims और mains examination में कैसे use कर पाओगे. So before I begin, I would also like to tell you that I'll be discussing some of the important MCQs with you that would be relevant for the civil services prelims examination. तो मैं वीडियो के एंड में आपके साथ कुछ MCQs भी डिस्कस करूंगा, right? So we have also launched our UPSC essay writing challenge, where you can participate every Sunday, and the best essay would be awarded with 1,000 rupees in cash. And you can enroll yourself for the mock test series, the Civil Services 2020 mock test series, जहाँ पे 70 tests हैं total, a comprehensive test series. You can avail you can enroll yourself both online as well as offline. मैंने description में दोनों के link दिए हुए हैं, आप वहाँ से details check कर सकते हो. And before I begin, I would like to tell that these are the number of the list that we'll be discussing. So the in-depth analysis would be on the myth around the free trade agreement, that is called FTAs. FTA के issue काफी important है RCEP के बाद. And these are the topics from the Hindu as well as from the Indian Express. So do check the list. Now let's get started with the in-depth analysis. So the title for that in-depth analysis is the myth around the free trade agreement. So this editorial has appeared in the Hindu newspaper. Okay. And it is also important, I mean, talking about its relevance in the general studies paper, it can be important for your prelims examination. At the same time, it can appear in the mains examination. And mains में अगर मैं specifically बताऊं, तो this can be important for your general studies paper 3, and it can also appear in general studies paper 2. Fine. क्योंकि UPSC what they are asking, the sum, if any part of the question arises from 2 as well या 3 से दोनों की combination है, तो they can intermingle in any of the general studies paper, right? So what exactly is the news? So the entire editorial concern about the free trade agreement and its myths. What are the myths related to, like India has not signed the RCEP, तो उसके repercussion क्या हो सकते हैं, उसके बारे में discussion है. सो फर्स्ट है कि इंडिया ने, जैसे मैंने आपको बताया, आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया है, जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, एंड दैट हैज अगेन लेड टू द डीप कंसर्न फॉर द इंडिया फ्यूचर ट्रेड पॉलिसी. So the stakeholders, the people concerned, the economists are now in the stake कि what will happen to the India future trade policy. But इतनी ज़्यादा hype करने की ज़रूरत नहीं है. I'll tell you कि what other things that need to be taken care of. मैं हर sector wise आपको बताने की कोशिश करूँगा, and कुछ question wise मैंने इसमें तैयार किया है आपके लिए, so that you get the clarity of that. So पहले बात करें कि the effects of India decisions surrounding around the 4 major issues. So the first is the export, the second is the investment, third is the integration into the global value chain, that is called GVC. Okay, you must be aware of the GVC. And the fourth is the domestic industry. Okay, these are the important 4 issues. And FTA can ensure that the market access to only a right quality of products at competitive price. So it is very important that the price that is being introduced in the global market is competitive enough so that the consumer, the end consumer, is getting the best out of it, right? Now moving ahead, what is the other impact? So जो इसके impact क्या है, impact on exports क्या होगी, तो वो सारे impacts मैं आपको बताऊंगा. तो first अगर exports की तो do FTA leads to an increase in exports, तो पहला है कि क्या increase होगा या decrease होगा. तो economics they have argued that not signing the RCEP, India exporter would miss an exporting RCEP country. जो RCEP के exporting countries हैं उनको miss करेंगे. But अगर मैं बताऊँ, already India has a FTA with the आसियान कंट्रीज, दैट इज एशियन में हमारे साथ जापान है, साउथ अफ्रीका है, और जो मेंबर कंट्रीज ऑफ आसियान दे आर ऑलरेडी इन द FTAs, फाइन. और 3 to 4 fold of the bilateral trade agreement has already the zero duty, that happened to be a zero duty. उसके बाद इंडिया हैज अ स्मॉल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना एज वेल, हमारा चाइना के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट है, फाइन. सो दैट इज ऑन अ नोट ऑफ द प्रेफरेंशियल ट्रेड. तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंशियल ट्रेड है. एंड साइनिंग ऑफ द FTA डज नॉट गारंटी, आई टेल यू माइंड दिस पॉइंट, इट डज नॉट गारंटी द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. सो दिस इज अ सिंगल मोस्ट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड विल बी फॉरवर्डिंग आवर डिस्कशन इन दिस ओनली कि व्हाई दिस इज नॉट द सिंगल पॉइंट दैट FTA कुड गारंटी द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. क्यों सर्च नहीं हो सकती है, ठीक है. दिस इज नॉट ओनली द सिंगल क्राइटेरिया द कंट्री शुड लुक अपॉन, राइट. एंड टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्ट ड्यूटी अगर पार्टनर कंट्री ने हाई किया हुआ है, तो इट इज लाइकलीहुड दैट द इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट बाय 10% व्हेन ड्यूटी बिकम 0, ठीक है. उसके अलावा मैं बताऊं, बाय द चेंजेस ऑफ द एक्सपोर्ट इंक्रीजिंग अगर लो है, तो इफ इम्पोर्ट ड्यूटी एंड द पार्टनर कंट्री इज लो एट द 1.3%.
ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज है, तो उस पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, राइट। एंड जापान, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, तो जापान हैज़ रिड्यूस्ड द ड्यूटी फ्रॉम 10% to 0%. दिस एग्जांपल विल help you to understand this point. So Japan has reduced the duty to 10% to 0. Now what has happened? India appeared at FTA in 2011. उसके बाद हुआ क्या? But India की अगर apparel export आप देखो जापान पे, तो that has fallen from 20 to 55 million जो 2010 में थी to $155 million in 2018. So you can see the decrease here. Okay. After, despite the fact, from 10% it was reduced to 0. राइट। एंड FTA कट जो है, जो कट इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज बेसिकली, इट इज ओनली फॉर मेनी फैक्टर। देखो, दैट इज नॉट ओनली टू डिसाइड विथ एक्सपोर्ट्स विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देयर आर अदर फैक्टर्स दैट नीड टू बी टेकन इनटू द अकाउंट। मूविंग अहेड, does the lower import duty regime help in getting the significant investment? This is a bigger question, and in this question only a question can be framed for the mains examination. So first and foremost, you need to understand, if मैं एक hypothetical example, this is something which is very realistic, बहुत ही data, authentic data ली गई है। तो we need to look into the automobile industry for the India and Australia. अगर मैं बात करूँ import duty regime की, lower import duty regime की, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के example ले सकते हैं, where in 1987 89% of the car that was manufactured, that was used, so it was being imported. 45% high was the import duty. Fine. So it protected the car industry as high as 45% of the import duty. What हुआ क्या? Later the local produced vehicle come down and duties were reduced. ठीक है, तो उसके consequences आप देख लो. Now today Australia import nearly all its tariffs from further, and they have reduced it to 5% level, from 45 to 5%. And presently अगर मैं बताऊं, जो most of the manufacturers हैं जो globally, like Nissan, Ford, General Motors, Toyota, Mitsubishi, so they are basically, they're producing car in Australia. They have shut up their shop. जो भी ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस हो रहा था, they have shut down their manufacturing plant. But what India could not attract a significant investment. अगर इंडिया ने इस तरह से टेरिफ हाई रखा, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज रखा, तो यहाँ पे you cannot attract the investment in the automobile sectors. Now this will result in the development of the indigenous car and auto component industries. Fine. उसके अलावे India can also think of lowering the import duties to promote the competitions. ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन के लिए एक सस्टेनेबल ड्यूटी की भी जरूरत है, सो दैट द प्राइस इज समवेयर इन दैट इज ऑन द कॉम्पिटिटिव नोट. नाउ मूविंग अहेड, डू FTA ईज एंट्री इनटू द GVC? ठीक है, जो GVC का पॉइंट मैंने आपको पहले बताया, वो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. देखो, GVC जैसे मैंने आपको बताया, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, इट वाज आर्ग्यूड दैट इट इज नॉट साइनिंग ऑफ RCEP, इंडिया विल नॉट मिस द पार्ट ऑफ द GVC. ठीक है, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, आई विल राइट इट फॉर यू, ग्लोबल वैल्यू चेन. ठीक है, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, सो एनी कंट्री दैट बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन, अंटिल इट हैज एफिशिएंट पोर्ट्स. देखो, पोर्ट्स बहुत जरूरी है, बिकॉज द ट्रेड इज बीइंग हैपनिंग ऑन द सी रूट्स, कस्टम्स, शिपिंग, roads, and the regulatory compliance and the infrastructure. So these are some of the important parameters. Apart from this, the GVC production, that is the global value chain, also require an harmonization of the product and quality standards. Right, now moving ahead, is India industry a protectionist? Because it has been always like, because the RCEP has not been signed, because India feel that India have taken a protectionist approach in terms of the industrial sector among all other important sectors like dairy, manufacturing, and beat every sectors. So cheaper import may replace the produced from the domestic industries. Fine. And अगर consider करें the impact of reducing import duty from Indian to 20% to the 0 for an FTA partners. और इसी क्रम में, if you want, like if a duty on a product that is as low as 3%, the local industry may not care about much on the elimination through any FTAs. ठीक है, so this is an important point. Now the FTA can ensure a market increase only on the right quality products as low at the competitive price. Admit this competitive would mean a best price. Okay, best price apart from the competitors. Now moving ahead, what is an important way ahead? आप एग्जाम में वे हेड क्या लिख सकते हो? देखो, it is very important that government should ensure the lower duties, okay, a sustainable duties for a competitive market, a competitive price के लिए on the raw materials, okay, for the manufacturing and intermediaries, then the concerned finished product.
उसके अलावा इट कैन सेट अप अ इलाबरेटिव क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एसेंशियल प्रोडक्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो. एंड मोस्ट कंट्री रेगुलेट द इम्पोर्ट थ्रू सच रिक्वायरमेंट. और टेरिफ्स के ना, देयर इज नॉट सच थ्रू द टेरिफ्स. फाइन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हो सकते हैं आपके लिए. Now India ranks higher than the US, Japan and China in terms of trade openness ratio. अगर trade openness ratio की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग काफ़ी हाई है. एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड जो मेजर्स है उसको इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है. और अगर मैं रेशियो के टर्म पे बताऊं, द रेशियो इन द सम ऑफ ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी, तो इंडिया रैंक्स इन द 43 कंट्रीज एंड इट इज मोर ओपन टू द यूनाइटेड स्टेट जिसकी रैंकिंग 27 है. जापान इज रैंक्ड एट 37 एंड चाइना इज रैंक्ड एट 38. सो these two are very important point. This can be relevant both for the prelims as well as mains examination. Moving ahead. Now these are the other editorial that is there in the Hindu. So I'll be discussing with you the tenor, the new tenor, and the Maharashtra politics, the myth and the free trade. With this I've already taken as an in-depth analysis. Now in the variance with official growth story. So these three we will be discussing. Now the GNU as a nationality, I have already dealt the GNU issue. It's not that important for you because it's a fees hike and it's more a politically motivated. No, see, definitely a price hike is important. I mean, issue is very important, but ultimately as a student, the content wise is not that important, right? And it is an exceptional withdrawal, like SPG cover has been withdrawn from the president of Congress, that is Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and the Gandhi families. So about that it has been written, so we will not get into the details of that because from exam perspective these things are not important. So the first, that is the tenor in the Maharashtra politics. So these will be coming under the general studies paper 2 and the subtopic would be function and responsibility of the union and the state. So what has happened, like after the big tussle, after the whole long horse trading, Maharashtra में अभी भी ये तो सरकार नहीं बन पाई and ultimately there's like no president rule, that governor rule is being imposed. उसके अलावा भी still the parties are trying their harder luck to form the government. Fine. So what because see what exactly is happening in a democratic country like India, when people vote they have a trust with the government, they want that these people should come into the power. जब आपने देखा होगा BJP and Shiv Sena ki jo the coalition that was formed, so people trusted them and they wanted to be form the government. But what happened at the end, Shiv Sena has refused to form the government and they wanted ki the coalition and the terms of the agreement which were there between the both of the parties is collapsed. तो उसके अलावा क्या होता है, the trust of the people, the working of the governance is hugely impacted. तो एक डिस्ट्रस्ट हो जाता है, एक ट्रस्ट मिस हो जाता है लोगों के बीच में. एंड डेफिनेटली इट कॉल फॉर द अदर स्टेक होल्डर्स इनटू द कंसिडरेशन. तो सर्वाइवल फॉर द रिटेंशन वाली बात है, आप देख सकते हो. एंड पॉलिटिकल जर्नी, देखो ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज़ है, बट मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है एंड जो गवर्नर की जो रूल है, ये आप बस दो देख लेना. दिस इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. Now moving ahead, ये आपके जनरल स्टडीज के पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वेयर द सब टॉपिक वुड बी इंडियन इकोनॉमी इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो इन वेरिएंस विद द ऑफिशियल ग्रोथ स्टोरी. सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपेंड, आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस एडिटोरियल प्रीवियसली, मैंने इसमें पहले भी बातें आपको बताई है. तो बेसिकली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जिन्होंने एसएसओ जो नेशनल अकाउंट्स का डेटा है वो पहले 2005 से इट हैज़ चेंज टू 2011 एंड 12. तो उसमें कुछ सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट देखी गई, कुछ सेक्टर में काफ़ी डाउनफॉल देखा गया. नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, दे आर चेंजिंग दिस फ्रॉम दिस टू 2014 एंड 2015. So now this will be again a big cost because what is happening, हर 10 साल में ये रेशियो चेंज होती है, every 10 years. Fine. So would it be feasible for this, because जो फिगर्स आ रही है that shows a great downfall in the sector wise. मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या अदर सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है. ठीक है, आप ये एक्सपेंशन ऑन द नोट बैंड भी डिमोनेटाइजेशन की बात की गई है एंड द चेंजेस इन द मेथोडोलॉजी, ये वाला सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हो, राइट. And I have already dealt with this topic, so I'm not getting into the details of it. Those of you who want to get the complete analysis can refer to my previous video. Now moving ahead, this is the editorial from the Indian Express. Let them have English. This I'll be discussing the challenger within
and this the cut above this I'll be discussing, and why we must not listen to Genu. I've already dealt, I will not be discussing these political issues, and ball bus in the majority court. This is about the Ayodhya verdict, so this has already been dealt in the previous video several times, तो ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है. Now the important aspects will be discussed. So the first is let them have English. हुआ क्या अभी रिसेंटली आपने मैंने न्यूज़ में भी डिस्कस किया था कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने what they have implemented कि English would be the medium of learning, no medium of instruction in the government school. ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाएगी. सो दिस हैज क्रिएटेड अ क्योस बिकॉज व्हाट विल हैपन, यू हैव टू चेंज द एंटायर अरीना एंड एंटायर सिस्टम, द एंटायर एम्बियंस, द एंटायर एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल. So what will happen that the teacher who was there, so they used to teach in the regional language. Now the first and the foremost thing is to make teacher learn English, then only they can teach to the students, right? So there are other loopholes. The implementation policy will take another 5 odd years to make this the dream of the chief minister that has there make feasible. ठीक है, तो उसके बारे में कि this has been talked कि is the English the only solution to curb the societal other distress. बिकॉज देखो बात ये कि इंग्लिश के प्रति इतने डोमिनेंस इस वजह से, बिकॉज पीपल फील कि अगर उनके बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो दे विल गेट अ गुड जॉब. एंड द अदर पॉइंट इज दैट अगर गवर्नमेंट स्कूल में उनको इंग्लिश मीडियम मिल रहा है तो विच दे कैन नॉट अफोर्ड द प्राइवेट स्कूल, राइट, दे आर प्रीटी हाई, द फीस आर वेरी हाई. सो this is what being supported from the people there. Government is trying to put all the implementation part, but again there are the other thin line that has to be considered. तो उस बारे में थोड़ी यहाँ पर डिस्कशन है, एंड इसके बारे में पहले भी एक आध एडिटोरियल आ चुकी है, एंड आई एक्सपेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मेंस में पूछ सकती है अंडर जनरल स्टडीज पेपर 2, राइट. मूविंग अहेड, अ चैलेंजर फ्रॉम द विदिन, यहाँ पे पीएस श्री कृष्णा की बात की गई है. सो ये आपके जनरल स्टडीज के पेपर 4 जहाँ पे एथिक्स की बात करूँ तो दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज दिस टाइप ऑफ पीपल पीएस लाइक पीएस श्री कृष्णा एज एन एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लोगों को जरूर याद आप मेंशन करना जब आप जनरल स्टडीज पेपर 4 में एथिक्स के पेपर को मेंशन कर रहे होगे, राइट, जब आप लिख रहे होगे. तो यहाँ पे पीएस श्री कृष्णा वॉज एन IAS ऑफिसर, ही वॉज फ्रॉम आंध्र प्रदेश cadre. And basically what he did, like he has given a mini constitutional status to the scheduled caste and scheduled tribe commissions. जो ST commission थे उनको उन्होंने काफ़ी when he was the secretary over there in the ministries, so he had done a commendable job in terms of augmenting the status of the ST/STs. तो उसके बारे में जिक्र है. And the other point that is discussed here is how the role of the human being into the augmenting the life of the people. तो उसके बारे में डिस्कशन है. एंड अगेन यू कैन राइट दिस एग्जांपल एज एन मीन्स कि आप अपने पॉइंट में इसको लिख सकते हो. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो यहाँ पे है. जैसे इन्होंने बताया कि लाइक व्हेन ही रोज टू द सीनियर पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी, सो ही बिकम अ क्रूशियल फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ द 65 अमेंडमेंट जो एक्ट आई थी उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए. उसके बाद employment and manual scandal section right जो latrines and act 1993 की, that was also being passed by him only. And a marginalized like special component plan for the scheduled caste in 1978. So this was, he was a major contributor in terms of governance. ठीक है, तो ऐसे examples आप जब मेंस में लिखोगे तो definitely it will give you more marks from the other people who are appearing with you. Okay, now moving ahead, अ कट अबव जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोजीशंस हैं इसके बारे में, दिस इज अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अ सिंगल इंपॉर्टेंट टॉपिक वेर यूपीएससी कैन आस्क यू अ क्वेश्चन बोथ इन द प्रीलिम्स एज वेल इन द मेंस एग्जामिनेशन. ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट. तो इसमें कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि क्या ऑलरेडी इसमें हुआ, पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है. मैंने एक इनडेप्थ एनालिसिस बनाया था 16 अगस्त के टाइम जब प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था कि देयर विल बी अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉल्ड CDS की पोजीशन होगी. एंड द मेन पर्पस इज दैट इट विल एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट एडवाइजर. इसको हम सिंगल पॉइंट एडवाइजर कहते हैं, ठीक है. इट विल बी अ सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू ऑल द 3 सर्विसेज, बीट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. ओके, इन तीनों फोर्सेस के लिए ये काम करेंगे. सो द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज अ वेरी क्रूशियल पोजीशन. अब अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू come up with the name कि who will be the first chief of defense staff. और जो इसकी जो रिकमेंडेशन हुई थी, जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, कारगिल रिव्यू कमेटी थी दैट कॉल्ड KRC इन 1999. तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि देयर शुड बी अ पोजीशन फॉर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ.
तो उसका वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो मॉडर्न वॉरफेयर है, अभी जो रिसेंट में जो चीज़ें चल रही है ना इन टर्म्स ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पोजिशन फॉर अ ऑफिस लाइक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. Fine, and definitely this will call for the formation of tri-services threat command, and it will save the defense diplomacy in the country as well. So एक defense diplomacy के लिए ये भी काफ़ी ज़रूरत है, right? So these type of words you need to write in the examination which will fetch you more marks. So defense diplomacy. Okay. Now moving to the important questions of the day. So you have to answer your question. Do let me know what is the correct answer. The static portion is from the polity. The constitution authorized the parliament to increase the area of an state, diminish the area of a state, alter the name of the state. So which among the following is correct? Whether 1 and 2, both 2 and 3, only third, or all of them is the correct answer. So it's a very easy question. You can definitely write the correct answer. Now the second question is from the PYQ. This is a PYQ from 2014 where UPSC has asked regarding the carbon credit. So which among the following statement is not correct with reference to the micro irrigation? Which of the following statement is not correct? So basically this is the question. You have to have this one. Now you have to tell me which among the following with reference to micro irrigation is correct. So first, the fertilizer nutrient loss can be reduced. Second, it is the only mean to irrigation in the dye farming. And third, it is an area of farming reading to the water table and checked. So which among the following is the correct code? Whether only one is correct, both 2 and 3, 1 and 3, and all of them. So many of you must be not aware of the what is the correct answer. So you can refer to the description of this video. Whatever you know is the correct answer, do participate. Write the correct answer in the comment section. So we'll come to know how many of you are participating, right? And you can also subscribe our Telegram official channel. We'll get the important compilation related to the examination notes, what to read in the newspaper, and the compilation from the Kurukshetra PIB. Everything is there in our Telegram channel. Do not forget to like this video, subscribe our YouTube channel, and you'll get all the notification related to the examination and the videos that is relevant to the examination as well. So this was there for the day. I sincerely thank you for listening to this video. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. We'll meet in the next video with some of the important editorial that is relevant for the examination. Thank you so much.